Exercise sum number 8. 2-point charges QA is equal to 3 microcoulomb and QB is equal to minus 3 microcoulomb are located at 20 centimeter apart in vacuum. Find the electric field at the midpoint O of the line AB joining the two charges. If a negative test charge of a magnitude 1.5 into 10 raised to minus 9 coulomb is placed at the center, find the force experienced by the test charge. So let us see the situation which is given. Here two charged particles are given, A and B. QA is equals to 3 microcoulomb. QB is equals to minus 3 microcoulomb, and they are separated by 20 centimeter distance, so it is 0.2 meter. At the center, at the midpoint of line joining of two charges at point O, we have to determine the electric field due to these two charges. So from A to O, this distance will be half, so 0.1 meter. It is also 0.1 meter. Now first, electric field at point O due to A. Electric field due to QA at O. So QA is a point charge. So EA is equal to electric field due to point charge is K QA by R square, and electric field due to QB at point O. So EB is equals to, again it's a point charge, so K QB by R square. B to O and A to O distances are same, so I write R only, and the magnitude of charges are equal. QA is equal to QB. So equation 1 and 2 are equal. We want to find the resultant electric field at point O. So from equation 1 and 2, we can write EA is equal to EB, both having the equal magnitude. Here we find the magnitude of electric field. Magnitude. Now, electric field due to A at point O, it is away from the A, so it is EA. बिकॉज ये चार्ज जो है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पॉइंट पर अवे फ्रॉम द ए होगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी चार्ज एट पॉइंट ओ, तो बी जो है वो नेगेटिव है, तो पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बी की टूवर्ड्स द बी, सो ई बी. सो हियर ई ए एंड ई बी आर इन सेम डायरेक्शन, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ए एंड बी का जो होगा वो सेम डायरेक्शन में ही होगा, दैट इज ई. सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज इन ओ बी डायरेक्शन, इट इज इन ओ बी डायरेक्शन. सो फर्दर ई ए इज इक्वल टू ई बी, मैग्नीट्यूड्स दोनों के जो है वो सेम है. नाउ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, resultant electric field at point O, here EA and EB are in same direction, so I write mod of E magnitude E is equals to EA plus EB, they are in same direction, so addition. But we know that from result 3 EA is equal to EB, magnitudes are same, so it is 2 EA. From result number 3, so 2 EA is equal to, we have this, so it is 2 into K into QA by R square. So 2 into value of K is 9 into 10 raised to 9,
value of QA is 3 into 10 raised to minus 6. Distance from A to O is 0.1, so it is 0.1 meter square. So resultant electric field value we will get 5.4 into 10 raised to 6 Newton per coulomb or volt per meter. If we write this electric field in a vector form, तो vector E is equals to 5.4 into 10 raised to 6 along OB डायरेक्शन, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है OB डायरेक्शन में. तो अगर हम वेक्टर साइन रख रहे हैं तो डायरेक्शन शो करना पड़ेगा. सो इट इज अलोंग OB डायरेक्शन. ओके, सेकेंड क्वेश्चन. यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन था कि इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज 1.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 9 कूलम प्लेस्ड एट द O. अगर पॉइंट O यहाँ पर हम एक चार्ज रख देते हैं Q, बट हमारा जो चार्ज है वो Q वो है नेगेटिव, तो वी ऑलरेडी फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O एंड वहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है. तो फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. So formula, force on a charge due to electric field. Formula F is equal to QE. Q, value of Q given in the question, that is 1.5 into 10 raised to minus 9. So 1.5 into 10 raised to minus 9 electric field we get 5.4 into 10 raised to 6. On solving this we will get the answer 8.1 into 10 raised to minus 3 न्यूटन. बट यहाँ पर हमने वेक्टर साइन रखी है तो डायरेक्शन शो करना पड़ेगा. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A एंड B. तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये डायरेक्शन में, इन एक्स डायरेक्शन. बट अपना जो चार्ज है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज ऑब्वियस अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस साइड. सो फोर्स ऑन माइनस Q, इट इज अलोंग OA डायरेक्शन. सो 8.1 into 10 raised to minus 3 न्यूटन अलोंग OA डायरेक्शन. This is our final answer. Exercise 9. A system has a two charges QA is equal to 2.5 10 raised to minus 7 coulomb. QB is equal to minus 2.5 10 raised to minus 7 coulomb. Located, it is on the Z axis minus 15 centimeter and the second charge at plus 15 centimeter respectively. What is the total charge and electric dipole moment of the system? So first of all, the situation which is given here, the charges are capped on the Z axis, so it's a Z axis. It is O. The charge QA set on the negative Z axis. So QA, it is on 0 0 minus 15 centimeters. So origin to QA, this distance is 15 centimeter. And the second charge which is negative QB, it is set at the 15 centimeter. It is 15 centimeter. First question, what is the total charge on the dipole? So we know that already the total charge on the dipole is 0. QA is equal to 2.5 10 raised to minus 7 coulomb. QB is equal to minus 2.5 10 raised to minus 7 coulomb. इन दोनों का एडिशन करोगे तो आंसर 0 होगा. सो टोटल चार्ज ऑन डाइपोल Q is equals to QA plus QB. QA plus QB, it is 0. So total charge on the dipole is 0. Second question is dipole moment.
So dipole moment, we know the formula of dipole moment, P is equals to 2aq, distance between two charges into magnitude of either charge. Here we are taking the magnitude. The distance between two charges QA and QB के बीच का जो distance है, it is 30 centimeter. The whole 2A is the total distance between two charges. It is replaced by 30 centimeters, so it is 0.3 meter. Magnitude of any one charge, it is 2.5 into 10 raised to minus 7 coulomb. On solving this, we will get the answer 7.5 into 10 raised to minus 8 coulomb meter. Okay, direction of dipole moment, if we put here a vector sign, so 7.5 into 10 raised to minus 8 coulomb meter. We know the direction of dipole moment is from negative to positive charge. तो यहाँ पर हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो QB है, QB इज नेगेटिव एंड QB इज सेट ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये चार्ज अपना माइनस है एंड A चार्ज इज पॉजिटिव. So we know that the direction of a dipole moment is from negative to positive charge P. So it is along the negative Z axis. So 7.5 into 10 raised to minus 8 coulomb meter along minus Z axis. This is the final answer. An electric dipole with a dipole moment 4 into 10 raised to minus 9 coulomb meter aligned at an angle of 30 degree with a uniform electric field. Magnitude of electric field is given 5.4 into 10 raised to 4 Newton per coulomb. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. So here we have to find the torque acting on the dipole in uniform electric field. So torque acting on dipole in uniform electric field, formula of torque is equals to PE sin theta, P given here 4 into 10 raised to minus 9 coulomb meter, electric field is 5 into 10 raised to 4, theta is 30 degree, sin 30 degree. On solving this, we will get the answer 10 raised to minus 4 Newton meter. This is the final answer. Exercise 15. Electric field 3 into 10 raised to 3 is in x direction. What is the flux of this field through a square 10 centimeter on a side whose plane is parallel to YZ plane? And second question, what is the flux through the same square if the normal to its plane makes a 60 degree angle with the x-axis? So let us see the situation which is given. Electric field is set in the x direction. So ये electric field सबसे पहले हम x direction में लेते हैं. And the plane which is taken here, it is YZ plane, so it is perpendicular. It is x axis, तो x axis को perpendicular plane होगा YZ. It is perpendicular plane YZ. Okay, and length of a square is given 10 centimeter. So electric field is given 3 into 10 raised to 3 I cap Newton per coulomb. Length is given 10 centimeter, so it is 0.1 meter. We have to find flux passing through the YZ plane. Phi flux we have to find. Now, formula of a flux is
flux passing through YZ plane. तो फाई इज इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज ई ए कॉस थीटा. बट हमें याद रखना है थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. इफ यू आर थिंकिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू YZ प्लेन और आप यहाँ पे 90 डिग्री रख दोगे तो गलत होगा, बिकॉज एंगल इज बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एंड एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन को परपेंडिकुलर होता है. तो YZ का परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ये होगा, वेक्टर ए. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर अब फिगर में देख सकते हो, दो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो थीटा जो होगा वो होगा 0. सो पुटिंग ऑल द वैल्यूज, इलेक्ट्रिक फील्ड 3 into 10⁻³ area L square, so it is 0.1 square. Theta is 0. Theta is angle between electric field and area vector. Cos 0 is 1. On solving this, we will get the answer of electric flux is 30 into 30 Newton meter square per coulomb, or another unit is voltmeter. Okay, second question. In the second question, what is the flux through the same square if the normal, तो ऑलरेडी यहाँ पर नॉर्मल यानी एरिया वेक्टर के साथ ही एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री. So here theta we have to take 60 degree. Same electric field. Now we have to find the flux again. So flux formula phi is equals to E A cos theta. So electric field is same 3 into 10⁻³ area L square. So it is 0.1 square. This time cos 60. Cos 60 it is 1/2. So on solving this you will get the answer of flux. It is 15 Newton meter square per coulomb, or its another unit is voltmeter. This is our final answer. Exercise 16. Consider a uniform electric field E equal to 3 into 10⁻³ I cap Newton per coulomb. What is the net flux through this field through a cube of side 20 centimeter oriented so that its faces are parallel to the coordinates plane? See, the situation is uniform electric field is set in x direction. It is electric field which is set in x direction. And now we consider a cube. Okay, we have to find the flux linked with this cube. But see here, for this face, field lines are going inside. So in a theory lecture we already discussed, for this plane the field lines are going inside, the flux is negative. And for this face, field lines are coming outside. So here for this plane we take flux is positive. So negative flux we say phi1, positive flux we say phi2. So total flux linked phi is equals to phi1 plus phi2.
बट फिगर पे से क्लियर है कि जितना फ्लक्स एंटर हो रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर आ रहा है. सो वी राइट हियर phi 1 is equal to phi 2 equal to phi dash. phi 1 equals to phi 2 equal to phi dash. जितना फ्लक्स एंटर हो रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर आ रहा है. तो phi 1 is a negative flux, so I write minus phi dash. phi 2 is a positive flux, so I write plus phi dash. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो होगा 0. सो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद दिस क्यूब इज 0. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना ही समझना है. जितना फ्लक्स एंटर हो रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर आ रहा है, यानी जितना नेगेटिव फ्लक्स है उतना ही पॉजिटिव फ्लक्स है, तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा. दिस इज आवर फाइनल आंसर. Careful measurement of electric field at the surface of a black box indicates that the net outward flux through the surface of the box is 8 into 10 raised to 3 Newton meter square per coulomb. What is the net charge inside the box? तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फ्लक्स दे दिया है एंड नेट चार्ज फाइंड करना है. सेकेंड क्वेश्चन बाद में देखते हैं. फर्स्ट, flux is given phi is equals to 8 into 10 raised to 3 Newton meter square per coulomb or voltmeter, and we have to find the net charged enclosed. This we have to find. So using Gauss theorem, formula of Gauss theorem is phi is equals to q by epsilon 0. We have to find q, so q is equals to phi epsilon 0. Phi is given 8 into 10 raised to 3. Value of epsilon 0 it is 8.854 into 10 raised to minus 12. On solving this, we will get the answer 7.08 into 10 raised to minus 8, which is equal to 0.07 microcoulomb. So this much charge is enclosed. Now the question number 2, if net outward flux through the surface of box were 0, तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि नेट फ्लक्स जो है वो 0 है. सपोज इट्स अ गॉसियन सरफेस. अब इसके अंदर डाइपोल है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो नेट फ्लक्स कितना होगा? नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है क्यू बाय एप्साइलॉन 0, सिग्मा क्यू बाय एप्साइलॉन 0, बट नेट चार्ज हियर इट इज 0, तो 0 अपॉन एप्साइलॉन 0 इज 0. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है ये सरफेस के साथ वो 0 है. अब हमें क्या पूछा है कि इफ नेट फ्लक्स इज 0, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स. तो अगर पूछा है कि अगर फ्लक्स 0 है तो इसका मतलब है कि अंदर कोई चार्जेस नहीं होंगे. इट इज राइट और रॉन्ग? तो यहां से क्लियर दिख रहा है कि इट इज रॉन्ग. नो, फ्लक्स इज 0 मीन्स sigma q is equal to 0. Net charge is 0. इसका मतलब ये नहीं होगा कि अंदर कोई भी चार्ज नहीं है. अंदर चार्ज होगा बट उसका जो नेट चार्ज है वो नेट चार्ज जो है वो 0 होगा. एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर. Exercise 18. A point charge 10 microcoulomb is at a distance 5 centimeter directly above the center of a square of side 10 centimeter. What is the magnitude of electric flux through the square? So यहाँ पर हमें फ्लक्स फाइंड करना है एंड हिंट इज गिवन दैट द थिंक द स्क्वायर एज वन फेस ऑफ अ क्यूब विद द एज 10 centimeter. So let us see the situation which is given. तो हिंट में जो बोला गया है कि सबसे पहले हमें क्यूब सपोज करना है. सो हियर आई एज्यूम द क्यूब ऑफ साइड लेंथ 10 centimeter.
So side length is 10 centimeter. Then after hint में बोला गया think of the square as one face of the cube. तो ये जो square है ये रहा, it is one face of the cube. And charge is kept at a 5 centimeter directly above, यानी ये जो प्लेन है उससे 5 सेंटीमीटर अप, यानी मिड पॉइंट पर, ये जो क्यूब है उसके सेंटर पर है. ओके तो यहाँ पर सिमेट्री है कि चार्ज जो है वो हर एक फेस से इक्वल डिस्टेंस पे होगा. एंड वी हैव टू फाइंड द फ्लक्स लिंक्ड विद द स्क्वायर, यानी ये जो स्क्वायर है इसी के साथ लिंक्ड होता हुआ फ्लक्स हमें फाइंड करना है. ओके सो फ्लक्स लिंक्ड विथ क्यूब. अब पूरे क्यूब के अंदर एक ही चार्ज है. सो यूजिंग गॉस थ्योरम phi is equal to sigma q by epsilon 0, net charge enclosed by epsilon 0. तो phi is equal to only one charge is enclosed, so it is q by epsilon 0, equation 1. बट ये हमें फ्लक्स मिला विथ क्यूब, और हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड आउट द फ्लक्स लिंक्ड विद द स्क्वायर. सो टोटल फेसिस आर 6, यहाँ पर क्यूब के 6 फेसिस है और हमें एक ही फेस के साथ फ्लक्स फाइंड करना है, तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 6. सो फ्लक्स लिंक्ड विथ स्क्वायर और एनी वन फेस ऑफ द क्यूब is phi dash is equals to 5 by 6. यहाँ पर हर एक के साथ सेम फ्लक्स लिंक्ड होगा, तो हमें किसी एक के साथ ही फाइंड करना है, तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 6. तो phi इट इज q by epsilon 0, तो इट इज q अपॉन 6 epsilon 0. So value of q given, it is 10 microcoulomb in the question. So 10 into 10 raised to minus 6 upon 6 epsilon 0, it is 8.85 into 10 raised to minus 12. So on solving this we'll get the answer 1.88 into 10 raised to 5 voltmeter or Newton meter square per coulomb. This is the final answer. See, यहाँ पर जो सिचुएशन थी कि क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज Q है एंड वो 5 सेंटीमीटर अप है फ्रॉम द लोअर प्लेन, तो टोटल फ्लक्स विद जो क्यूब होगा वो होगा Q बाय एप्सिलॉन 0 एज पर गॉस थ्योरम. एक ही चार्ज एनक्लोज हो रहा है तो Q बाय एप्सिलॉन 0. बट हमें फाइंड करना है फ्लक्स लिंक्ड विथ एनी वन फेस, कोई भी एक फेस के साथ फाइंड करना है, तो क्यूब के 6 फेसिस होते हैं. तो ये जो फ्लक्स है ये हमें मिला है विथ टोटल 6 फेसिस, बट विथ ओनली वन, हमें सिर्फ एक ही फेस के साथ फाइंड करना है, तो डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, फ्लक्स लिंक्ड विथ एनी वन फेस. A point charge 2 microcoulomb is at the center of the cubic Gaussian surface 9 centimeter on edge. What is the net electric flux through the surface? So let us see the situation which is given here. A point 2 microcoulomb charge is at the center of a cube. तो यहाँ पर क्यूब को हमने लिया हुआ है गॉसियन सरफेस. This cube is Gaussian surface and at its center there is a charge Q. We have to find the net flux linked with the surface. So this cube is Gaussian surface, so net flux linked
that we can find using Gauss theorem. Phi net flux equal to the charge which is enclosed by epsilon 0. So here enclosed charge is just 1, so I write here q by epsilon 0. Value of q is given 2 microcoulomb, so 2 into 10 raised to minus 6 upon epsilon 0, 8.854 into 10 raised to minus 12. On solving this, you will get the answer 2.26 into 10 raised to 5 Newton meter square per coulomb or voltmeter. This is the final answer. Exercise sum number 20. A point charge causes an electric flux minus 110 raised to 3 Newton meter square per coulomb to pass through a spherical Gaussian surface 10 centimeter radius centered on the charge. Question 1. If the radius of Gaussian surface were double, how much flux would pass through the surface? And second, what is the value of point charge? So question number 1. See, अगर ये Gaussian surface है and charge Q is enclosed, तो जो फ्लक्स लिंक्ड होता है नेट फ्लक्स इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई एप्साइलॉन 0. तो यहाँ पे चार्ज जो एनक्लोज हो रहा है दैट इज 1 ओनली, तो क्यू बाई एप्साइलॉन 0. इसकी रेडियस हम ले रहे आर. नाउ इफ यू मेक अ रेडियस डबल, अगर इस रेडियस को हम डबल कर देते हैं गॉसियन सरफेस की 2r, और चार्ज तो सेम ही है q, तो नेट फ्लक्स होगा सिग्मा क्यू बाई एप्साइलॉन 0, दैट इज क्यू बाई एप्साइलॉन 0. सो फ्रॉम रिजल्ट 1 and 2 we can conclude that the flux depends on the charge enclosed, not depends on the radius of the surface. From 1 and 2 we can say flux depends on charge enclosed, not on radius of the Gaussian surface. There is one more question. The second question is, what is the value of point charge? The flux is given this much. So phi is equals to given minus 1 into 10 raised to 3 voltmeter. We have to find charge enclosed. यहाँ पे फ्लक्स नेगेटिव है, इसका मतलब ये होगा कि चार्ज जो एनक्लोज्ड है वो भी नेगेटिव ही होगा. सो यूजिंग गॉस थियरम, phi is equal to sigma q by epsilon 0. Phi is equal to this minus 1 10 raised to 3 is equal to sigma q by epsilon 0, that is 8.854 10 raised to minus 12. So on solving this we will get the answer sigma q is equals to minus 8.854 into 10 raised to minus 9 coulomb, and 10 raised to minus 9, it is nanocoulomb. So answer is minus 8.854 nanocoulomb. This is the final answer. Exercise 21. A conducting sphere of radius 10 cm has unknown charge. If the electric field 20 cm from the center of the sphere is 1.5 into 10 raised to 3 Newton per coulomb and points radially inward, what is the net charge on the sphere? So situation given here, conducting sphere is given, and on this conducting sphere suppose there is a negative charge. अब हमने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्यों लिया हुआ है? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि
रेडियली इनवर्ड है, अगर पॉजिटिव होता है तो रेडियली आउटवर्ड होता है. रेडियस इज 10 सेंटीमीटर. इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया है दिट इज गिवन एट द 20 सेंटीमीटर, तो इट इज एट 20 सेंटीमीटर ऑन पॉइंट P. ये पॉइंट P का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे दिया है E इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम. वी हैव टू फाइंड द Q. नाउ द होल चार्ज ऑन दिस स्फीयर act as a point charge and concentrated at its center, so act as a point charge, and we know that the electric field due to point charge, electric field due to a point charge, formula E is equals to kq by r square. E is given this much, 1.5 into 10⁻³. K is 9 into 10⁻⁹. Q we have to find. R 20 centimeter, so it is 0.2 meter, 0.2 square. Unknown term is Q. So on solving this, we'll get the answer of Q is 6.67 into 10⁻⁻9 coulomb. So it is nanocoulomb, but we know that the charge is negative, so Q equal to minus 6.67 nanocoulomb. And why we take minus sign? Because electric field is radially inward, so charge should be negative. This is the final answer. Exercise 22. Uniformly charged conducting sphere of diameter 2.4 meter has a surface charge density 80 microcoulomb per meter square. Find the charge on the sphere. What is the total electric flux leaving the surface of the sphere? So first of all, the situation which is given here, एक स्फीयर दिया है जिसका डायामीटर है 2.4 मीटर, तो रेडियस r इट इज 1.2 मीटर. सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन, दैट इज सिग्मा, it is 80 into 10⁻⁻6 coulomb per meter square. We have to find the charge on the sphere. Charge on the sphere we have to find. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू Q बाई ए. Q इक्वल टू सिग्मा ए. यहाँ पर स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया होगा 4πr². पुटिंग ऑल द वैल्यू, सिग्मा गिवन 80 इंटू 10⁻⁻6, 4π is 3.14, रेडियस 1.2. सॉल्व करके इसका आंसर आएगा 1.447 इंटू 10⁻³ कूलम. तो इतना चार्ज है स्फीयर पर. Second question, what is the total electric flux leaving the surface of the sphere? So question number 2, we have to find electric flux. So using Gauss theorem, phi is equals to the charge enclosed or net charge enclosed by epsilon 0. Net charge enclosed we already find this much, 1.447 into 10⁻³ upon
epsilon 0 8.854 into 10 raised to minus 12. On solving this, we will get the answer 1.63 into 10 raised to 8 Newton meter square per coulomb or voltmeter. This is the final answer. Exercise 25. An oil drop of 12 axis electron is held stationary under a constant electric field 2.55 into 10 raised to 4 volt per meter. In Millikan's oil drop experiment, the density of the oil is 1.26 gram per centimeter cube. Estimate the radius of the drop. See, the situation which is given here, यहाँ पर एक oil dropper. This oil drop is held stationary. ये ऑयल ड्रॉप है, ये एयर के अंदर स्टेशनरी है. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो हमें पता है कि एक फोर्स होगा, दैट इज mg. But held stationary, that means there must be some other force which balancing the mg. So it is kept in an electric field and it has 12 excess electron, means इसके ऊपर चार्ज है q and it is kept in an electric field. The force on a charge due to field, it is QE. So that force QE must be in opposite direction, तो ही ये दो फोर्स की इफेक्ट जो है वो नलीफाई होगी. वन मोर टाइम, इट इज ऑयल ड्रॉप, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा mg बिकॉज इट हैज अ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, सो इट हैज अ नेट चार्ज, सो and due to electric field it experience the force QE, force on a charge due to field, and that QE force should be in opposite to mg. Now the data which is given here, 12 excess electron, so charge on oil drop Q equal to Ne, Q is equal to 12E. It is negatively charged, 12 E coulomb, because 12 excess electron तो minus होगा. Second data which is given here, it is electric field. Electric field is given 2.55 into 10 raised to 4 volt per meter, and the density given here, rho of oil, it is 1.26 gram per centimeter cube, which is 1.26 into 10 raised to 3 kg per meter cube. Here given that it is in equilibrium, oil drop is in equilibrium, oil drop is in equilibrium, so QE and mg will balance each other. So QE is equal to mg. Okay, Q is equal to, we have 12E, we are taking the value here, magnitude, so 12 into E into electric field E. Mass is equal to density into volume into G, m replaced by rho V, because we have to estimate the radius. So 12 into E rho volume replaced by 4 by 3 pi r cube, oil drop is spherical, into G. So making r cube as a subject, so r cube equals to, we will get 12 into 3, 36 into small e capital E upon rho into 4 into pi into G. Putting all the values, 36 into 1.6 into 10 raised to minus 19 into electric field is 2.55, 10 raised to 4. Density 1.26, 10 raised to 3 into 4 into pi is 3.14, and G we take 10. Okay, or you can take 9.8 also. On solving this, you will get the answer 946.09 into 10 raised to
minus 21, and then after a cube root. So after taking the cube root, you will get the answer 9.82 into 10 raised to minus 7 meter is equal to 9.82 into 10 raised to minus 4. तो ये मिली में कन्वर्ट हो जाएगा मिलीमीटर. This is the final answer.